have done this one. Okay, so let's do this one. We have done almost all the questions. Let's take the questions that is S type and some N terms and उस सारे questions अगर है तो हम लोग देख लेते हैं. Okay. If this questions comes to examinations, question number 8, which just whether this is true or not to say that whether are the n terms of an AP, क्या ये n terms हो सकती हैं किसी AP की? Okay, let me select some different questions. Okay, let me select some different questions from this part. After this chapter, which chapter would you like to study? Trigonometry. Which one? Trigonometry. Trigonometry has come in the previous examination, so it will not be coming back now. So it Applications of trigonometry. It has two parts. Okay, applications of trigonometry. Okay. So we have done this one. If S in terms of an AP is this and AK terms of this F and AP is this, find the value of K. To do this question number 25. Do this question number 25. Okay. So are you doing? Yes, sir. Yes, sir. Since you need to find out that which term of this AP is 164. Is the sum of these terms is being given to you. So what you need to do is first you need to calculate the value of A first term and the D, the common difference.
K is equal to 27. Okay, I got 25. you got 25. Okay, let's me check what's the correct answer. So if I'm saying Sir, I got 27. you get 27. Okay. So here we have, if we have, Sir, mine is wrong. yours is wrong. So you find your mistake. Now is it 27 or not? Yeah, it's 27, but I got 25. Okay. So if the SN terms denotes the first n terms of an AP, then prove that this one. How will you be able to prove? Will you be able to prove this one? The 12 term is equals to 3 times the sum of 8 terms and 4 terms. So such type of questions, in such type of questions, what you need to do here is just put the values here of in the formula and just take the common, and after this you will be going to get the right hand side is equals to the left hand side. Okay, so how can you do this one? This, for example, if you are just going to calculate this 12 terms, so S12 will be 12 by 2 bracket 2a plus 12 minus 1 into d. A and D you don't, and this is similar to 3 common. The sum of 8 terms of an AP would be 8 by 2 bracket 2a plus 8 minus 1 into D, and minus 4 by 2 bracket 2a plus 4 minus 1 into D. Got it? Now this is 6. Now 6 2s are 12. Or you can simply let it be the same as 6. So we can say here that 6 is equals to 2a plus 11d. 11d. Okay. And here the same answer you will going to get here. Okay. That you will get 7d, and it will be 2a plus 7d, and 8 by 2. 8 by 2 is simply, we can take the, this is simply 4 and this is simply 2. Okay. So when you take the 2 as common from both, so you can get 3 into 2 bracket 2 bracket 2a plus 7d 7d. Okay, minus 4a plus this will be 1 minus this will be 3d, and you have to put here, sorry, what I have done here is just wrong. You have to put here 2, right here 4, because I have taken the only 2 as common now. So I have to write here 4. नहीं, मैंने पूरा 2 कॉमन ले लिया था, तो 2 चला गया होता, तो इधर 2 बचेगा खर्च. Okay, so this is 2 only here. This is 2 only here, and this is nothing but 2a plus 3d. Okay, so when you get this one, you will get 6 here, 6 here. So 6 and 6 will get cancelled out. Now what you are going to get here is 4a, and this is 2a, or you can simply open that 4a plus 14d is equals to 2a plus 3d, and then again you can get here that is 2a plus 11d, and this is same to this one. Okay, so this is it, hence proved. Got it? Got it? Okay, let's move further. So we have done this one in a better manner. Okay, so if we are having this one, that the 8th term of an AP is half the second terms, and the 11th term exceed the 1 terms by 4th term. Find its 15th term. So do this question for the one. Do this question.
Now you got this? So can you explain? I didn't get the question. Okay, if the eighth term of an AP is half its second term, and it is being said that if the eighth term of an AP, eighth term means a plus 7d, eighth term means a plus 7d. If the eighth term of an AP is half its second term, is half means this is half of its second term. So what is the second term? The second term is a plus d. This is the second term. So it is saying if the eighth term of an AP is half its second term, means this is half of its second term. For example, if it is 40, then it will be 20. If it is 90, then it will be 45. If it is 10, then it will be 5. Okay. So we have to multiply, for making this equal, we have to multiply this term with 2. That is equal. ये नेगेटिव सेंस में जा रही है AP, मतलब this is increasing order में नहीं है, decreasing order में. So we can say that कि if the eighth term of an AP is half its second term, यानी half है उसकी second term से, तो इक्वेशन बना हमारे पास फर्स्ट. इसमें कोई डाउट यहाँ तक बोलिए? No, sir. If the eighth term of an AP is half its second term and the 11th term exceed, and the 11th term means a plus 10d. This is then the 11th term exceed means ज्यादा है 1/3 of its fourth term. मतलब कितना ज्यादा है? by 1. यानी कि अगर मैं 11th term में से 11th terms exceed 1/3 यानी 11th term जो है वो ज्यादा है अपनी फोर्थ टर्म से. ठीक है, अपनी फोर्थ टर्म से कितना? by 1, 1/3 of its fourth term by 1. Find its 15th term. So it is being given to you that the 11th term means a plus 7d is exceed means ज्यादा है. ये ज्यादा है कितना? 1/3 of its fourth term. मीन्स अगर मैं इसमें से 1/3 of its fourth term को माइनस कर दूं, 1/3 of its fourth term means a plus 3d, then it will be equivalent to how much? That will be equivalent by 1. Okay, now try to find out the value of a and d.
3. You get the value. You got the value? Anishka? I mean, by solving the a plus 10d equation, I got 3. A plus 10d equation, you get 3. What 3? 3. Only 3. Like A and A will get cancelled out and D will also get cancelled out. D is equal to 3. Okay, D is equals to 3, na? Yes, sir. So, okay, D is equals to 3. Positive 3 or minus negative 3? Positive 3. And in this case? Sir, I got negative 3. You get negative 3. Okay, let me check. So here you are going to, how will you be able to find out? इस equation से तो आप नहीं निकाल सकते ना A और D की वैल्यू, क्योंकि इसमें अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और ये कैंसिल आउट ही नहीं होंगे, तो A तो कभी कैंसिल आउट ही नहीं होगा, पूरा पूरा A नहीं कैंसिल आउट होगा ना, A by 3 आएगा. So when you open this bracket, you will find A plus 10D, and this will be minus of A 3 by A plus 3D. Sorry, minus of 3D, minus of 1D, minus of D means is equals to 1. When you multiply this one, you will get 1 upon 3A, and when you multiply this one, you will get this one. So you can find that this is 1/3 of this A. When you subtract this one, this value you will get 2/3 of A plus 9D is equals to 1. This is your first equation, and or you can simply say that this, you can multiply this equation by 3. So when multiplying this equation, okay, with 3, so you will get here 2A plus 27D is equals to 3. You got it? कैसे आए? And multiply the whole equation by 3. Okay, so this is our first equation. Another equation is 2A plus 14D. 2A plus 14D, okay, is equals to A plus D. A plus D. So you can write here A, when this will A will get cancelled out, and this D will goes to that side. You'll get A is equals to minus of 13D. Okay, got it? Yes, sir. Now putting this value of A is equals to 13D. So you will not be able to calculate the value of, what's the value of A? A is equals to 13D, na? And you need to calculate its 15th term. So what is the 15th term of this AP? That is A plus 15 means 14D. You need to calculate the value of this value. And that will be coming in terms of, let's check what is the value of A. So putting this value A here, that means if you are only able to calculate the value of D, then only you will be able to solve this one. So if you put this value, what's the value of A? A is A, and actually D is minus of, or you can put the value here. हम लोग D की वैल्यू को A में रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो A की जगह पर मैं रख देता हूँ यहाँ पर माइनस ऑफ 13D. ओके, माइनस ऑफ 13D प्लस 14D इज इक्वल्स टू, मीन्स वट एवर द वैल्यू कम्स, D जो होगा वही 15th टर्म है इसकी. ओके, समझ आया? अब D की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए A की, that is minus of 13D, and then you will be able to calculate the value of D. So बताइए D की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप इस इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट करते हैं तो D की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए. सो 2A मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो ज्यादा जगह हो जाएगी. 1 मिनट.
Okay, now we have what we have. जगह तो नहीं है, इतनी ही जगह है, so मैं इसको और बड़ी कर देता हूँ. Hello Asila, how are you? So if I'm writing here this one, that 2a upon 3 plus 9 means I'm just placing the value of a, that is minus of 13d here, upon 3, and plus 9d is equals to 1. Okay, then when you multiply this one, you will get 26 26d minus 26d, और this will comes upon 3. ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस व्हेन यू टेक द एलसीएम 3, मैं यहाँ पे भी 3 एलसीएम लेता हूँ, तो दिस विल बिकम 27d is equals to 1. Then you take the 3 as एलसीएम, you will get d is equals to 3. ओके, d कितना आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव 3 आ जाएगा. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. और कैसे आएगा? देखो, ये 3 आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो you will get only d, and when this 3 will goes to that side, you will get here what? You will get 3. So you can find that d is equals to, this 3 will goes to that side, and this will give you only d, so d is equals to 3. So in this case, our 15th term was a plus 14d. a plus 14d हमारी 15th term होती है, so a की वैल्यू है हमारे पास 13d, minus of 13d और plus 14d, you only get d, so d is actually 3, and that is your 15th term also. Okay, got it? समझ Correct, आया? sir. So the answer is 3. Yeah, the answer is 3. Okay. Okay, please copy this one. I start doing from here. The first equation is this, means I made this one, then you have to write this one, and then you simply means copy, please, you know, don't actually you do this question again, so that, okay, if you just get stuck somewhere, then I'm going to help you. Okay, this is a good question. Done, sir. Done. Okay, so let's do. So please wait. Oh, okay. Asila, how are you? Asila, are you there in the class? She's not responding. Every time you join the class, you always learn some new things.
Am I right or wrong? Indeed, sir. So please do not miss the class. Done, sir. Okay, so let's move further. Okay, so let's do the trigonometry. Should I start the trigonometry Now, or should we Yes. continue with this one today? um, Okay, let's start the trigonometry in the next class. Let's okay, do some more questions regarding to this one. Okay, so Yes, sir. okay, so here this is the type of question that usually comes in the examinations. Find the sum of integers between 1 and 500 that are multiple of 2 as well as 5. And when we are talking about between, it means that we are not including 1 and 500. Okay, 1 and 500 is not included. It means you have to start from 2 and you have to end at 499. Okay, this is not included. So is that can be an AP? For example, if I'm having a number that is 2, then 5, and then 8, and then, sorry, and then 10, and then 12, then 14, then 15, then 16, then 17, sorry, then 18, then 20. Is it an AP? No, sir. So what you have to do is, you have to find out separately. Okay, you have to find out separately the multiple of 10 and 5. Okay, अच्छा इसमें ये भी कह रहा है कि as well as दोनों से हो, मतलब 2 से भी और 5 से भी. सो पहले तो आपको 2 के मल्टीपल निकालने होंगे, ठीक है. उसमें से फिर आपको वो मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना होगा. मतलब आपने सपोज कीजिए कि आपने 2 के मल्टीपल निकाले, लेकिन ये 2 का मल्टीपल जो है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे 2 एज वेल एज 5. तो खैर ये तो खैर 2 से और 5 से दोनों से बोल रहा है. तो यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ 2 और 5 वाला ही लेंगे. दैट इज सबसे पहले या तो 2 से भी हो एज वेल एज 5, मतलब दोनों से हो तो वो 10 नहीं हो सकता है. वो 10 से स्टार्ट होगा, मतलब 10 देन 20 दिस. तो ये तो एपी कंसीडर कर लिया जाएगा, जो ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो एज वेल एज 5 से भी डिवाइड हो. तो दैट विल बी 10. देन सो ऑन करते करते आप जाएंगे तो 30. तो ये एपी आ जाएगा. और ये 499 तक आपको लेना है, तो 490 ही होगा लास्ट वाला. उसके बाद तो नहीं होगा जो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाए. ओके, एज वेल एज 5. ओके, दोनों से होना चाहिए. तो ये एपी कंसीडर कर लिया जाएगा. ओके, अब उसके बाद अगर यहाँ तो आप आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ पर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d. n-1 into d. Okay, but you don't know the number of terms, so how will you be able to calculate? So first you need to calculate that which term of this AP is 490. If a is 10, d is also 10, and we are going to have this an term that is 490, then what would be the value of an term? So first calculate the value of an terms. Calculate the value of n term. sir, 49. 49. इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है ना? 49 या 40 50 होगा. Sir, 49. 49 श्योर. 10 भी इंक्लूड हो रहा है ना उसमें. So 500 is not there. 500 is not there. So let's check. मुझे एक बार निकाल लेना चाहिए. 490 is equals to a plus a is actually 10 plus n-1 into d is 10. So a plus n-1 into d. So when this will goes to that side, okay, so 480 is equals to, yes, it will be 49 na? 10 40, okay, 49 टर्म्स है हमारे पास. तो 49 टर्म्स के लिए आप यहाँ पर निकालेंगे. अब बहुत आसान है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए. f is equals to n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म.
ओके, सो ये आसानी से हो जाएगा, 49 टर्म्स है। Yes, sir. जब Yes, बोलेगा sir. कि when it is being asked in the question, when it is being asked that you need to find out the sum of those integers from 1 and 500. Now 1 and 500 is also included, but 1 is not exactly divisible by 2 as well as 5, तो 1 तो मानना ही नहीं है इसमें, तो पहली टर्म तो हमारी 10 ही होगी, लेकिन इसकी लास्ट टर्म हमारी 500 कंसीडर कर ली जाएगी, और उसमें अब की बार जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो 50 होगी, और ये जो भी सम आएगा उसी को हम लोग बस अब की बार a 50 करके प्लस, मतलब जो भी सम आएगा उसमें 500 को ऐड कर देंगे हम लोग लास्ट टर्म, क्योंकि हमारी 500 उसमें ऐड होगी। ओके, समझ आया? Yes, sir. तो उसमें दोनों इंक्लूडेड है। अब ये वाला मुझे बताइए कैसे याद करेंगे, द सम ऑफ दोज इंटीजर्स from 1 to 500 which are multiple of 2 or 5, means either they are multiple of 2 or 5. So first of all you have to calculate the whole multiple of 2, then the whole multiple of 5, and then you have to remove the multiple, because जब आप इसमें करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएंगे कि आपको 2 का मल्टीपल भी चाहिए और 5 का मल्टीपल भी चाहिए, तो 2 का मल्टीपल हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2 से, और फ्रॉम बोल रहा है तो इसमें 500 भी हमारी डिजिट्स काउंट की जाएगी, मतलब लास्ट डिजिट 1 तो है नहीं, so 1 then 2 then 4 and then 5 and then 6 then 8 and then 10 and then 12 and so on, but it is not an AP, ये AP नहीं है, AP नहीं है, आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहले आप 2 के मल्टीपल निकालिए, 2 ठीक है, and then 4 then 6 and then 8 and so on। आप 2 के टोटल मल्टीपल्स का सम निकाल लीजिए, यानी कितना 2 के इंटीजर्स होंगे जो कि 2 से मल्टीपल होंगे, आप उनका सम कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कीजिए उनका सम 2 के मल्टीपल का सम x आया है, आपने x रख दिया, उसके बाद आप 5 के मल्टीपल का निकालिए, 5 देन 10, और लास्ट टर्म इसमें भी 500 होगी, ठीक है, और इसमें भी लास्ट टर्म 500 होगी, तो 5 10 एंड देन 15 देन 15 देन 20 एंड सो ऑन करते हुए हमें 500 तक जाना, इसमें भी 500। सपोज कीजिए ये S5 हमारे पास Y आया है। ओके, अभी आपको देखेंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 5 का मल्टीपल में 10 इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, फिर 20 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों में 20 आएगा, तो इस तरह से 10 भी एक बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 20 भी आ रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम उस नंबर को इसमें से इरेज कर देंगे दैट आर द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, जो हमने पहले एपी बनाया था इस केस में, दैट वाज 10 देन 20 50 टर्म्स को कंसीडर करते हुए हमने जो एपी बनाया था 30, तो क्योंकि 2 बार आ जाएंगे ना, 2 बार आ जाएंगे, क्योंकि 20 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो हम लोग को वो सब माइनस करना पड़ेगा ना, 2 बार नहीं ऐड कर सकते, सो हम लोग x के सम को प्लस करेंगे, यानी x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, यानी 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल। समझ आया? गॉट दिस वैल्यू? समझ आया? Yes, sir. सो ऊपर वाला जो यहाँ बीच वाले क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आप माइनस करेंगे, क्योंकि फ्रॉम बोल रहा है तो उसमें 500 इंक्लूड की जाएगी, और 50 टर्म कंसीडर करेंगे, इसमें n की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। आपको इस वाले केस में सिंपली a की वैल्यू जो आ जाएगी वो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू इस वाले केस में आपके पास आ जाएगी 100, और इस वाले केस में n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट वुड बी दी 250, n की वैल्यू इसमें 250 आ जाएगी। गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके हिसाब से आप कर लेंगे, मैं समझ लूं कि आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। असीला, are you there in the class? Yes, sir. Are you getting? Yeah, sir. Okay. So should I delete this one and should I move to the next question? Okay. So let's move. Will you be able to prove this one? Show that the sum of the sum of an AP whose first term is A
The second term is B and the last term is C. Will you be able to show this one? Proving questions are hard. Proving questions are hard. So means you will not be able to solve, na? Yeah, so. Okay. अगर ये वाले क्वेश्चन को मैं इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन पर आता हूँ, ये तुम आप आसानी से करके दिखाओगे मेरे को। बताइए इसमें क्या पूछा गया है? x को पूछा गया कि फाइंड x, और x क्या है बताइए। x is the last term of this AP ना? आप मुझे है कोई मुझे जो करके दिखाएगा ये वाला क्वेश्चन? Sir, I'll try. Yes, sir, I'll try. Okay. So x is equal to 50. Okay, x is equals to 50.
-4, then -1, then +2, then so on. So actually you find that A is equals to -4, D is equals to +3, and A n terms you need to calculate. A n term is being given to you. That is X, sorry, you need to calculate. And Sn terms is being given to you, that is 437. So first you calculate the value of n. Yes, sir. By putting the formula that Sn is equals to n by 2 bracket sir. 2a plus n minus 1 into d na? Yes, sir. That is 2 into -4 plus n minus 1 into d is 3. So you will get -8 when you multiply this one. N by 2 into -8 plus 3n minus 3. So we'll get minus of 11. Minus of 11. Okay. So n by 2. And it is being given to you that minus of 11 into 3n minus 11. And that is equals to 437. 437. Okay. So it is just n square, 3n square. So we get n square, 3n square minus 11n is equals to 4n 8, 874. यही इक्वेशन है तनिष्का. Yes, sir. ओके. सो n की दो वैल्यूज, एक नेगेटिव आई होगी, एक पॉजिटिव ना. नेगेटिव वैल्यू n की कभी हो नहीं सकती, तो रिजेक्ट कर दिया गया होगा. n की वैल्यू कितनी है आपकी? So 19. 19 टर्म. और दूसरी वाली 19 upon 3. I mean minus. okay. Okay, so it is 19. Okay, and if n is 19, so you can consider this one. So now you can easily calculate the value of an, because you know that an is x, so you need to calculate the value of x. You know the a first term, d you know, n you know, then you can easily calculate. समझ आया आपको, या ये भी मैं सॉल्व करके बताऊं? बोलो कि ये कैसे आया. You understand this? Yes, sir. Everyone, other? Yes, sir. Sayyad, you understood? Sayyad, Yes, sir. Asila? Yes, sir. Okay, so we have done these questions also. Do this last question and then chapter will be finished. Practice only those questions that we have practiced. हमने इतने practice कर लिए हैं कि अब आपको सारे questions आ जाएंगे. इस chapter से हम लोग ने NCERT examiner से हम लोगों ने कर लिया है. We have done from NCERT, we have done some extra questions like the P8 term, Q8 term. This is from R.D. Sharma and other books. Okay, so we have practiced every question. So I think that's all for this chapter. So please do this last questions, and the next class then we're going to study the new chapter. Okay.
Sir, I found it. Hmm? I got the answer. You got the answer. What's your answer? S20 is equal to 920. 920. 920, na? Sorry, 970. Sorry, 970. Yes, sir. And then Ishka, yours and others? I'm doing. Okay. Sayed, have you done? Asila and Sayyed, have you done? So S20 is equal to 970. 970. Okay. Any other student? Sir, I got correct. Okay. Okay. Can you explain this a little bit, but Yeah, why not? So if the sum, it is being given in the question. Okay. So let's discuss. The sum of first 5 terms of an AP means first 5 terms plus, and the sum of first 7 terms of the same AP means first 7 terms is equals to 167. Okay. So we can write here first 5 terms plus first 5 terms plus sum of means actually में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 term plus 7 term is equals to 167. यही तो मतलब हुआ first 7 terms and the sum of first 7 terms. Oh, हाँ दोनों का ना, the first 5 terms का and the sum of first 7 terms of this AP, इन दोनों का sum कितना है 167 है. So बताएं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग, बोलो. कोई डाउट इसमें, बोलो. no, sir. ओके. या नहीं भी लिख सकते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है. ठीक है. अब कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 235. हमेशा आपको दो इक्वेशन दी होगी, इसका मतलब है आपको सेपरेटली ए की और डी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि दो वेरिएबल्स होंगे ए और डी. तो उसमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. एक इक्वेशन से आप एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पर भी हम लोग को वही करना होगा. ओके, गॉट इट. सो लेट्स डू दिस वन आल्सो. Okay. Okay, so if I'm writing here 5 plus S7 is equals to 167, and then
you can write here a plus sorry sum of 5 terms कितना होता है बेटा, n by 2 bracket 2a plus you can write here 5 n by 5 by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। आप इसकी आसान तरीके से मतलब ऐसे ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दो 5 टर्म्स का सम हो गया। और a प्लस 6d कितना होता है, a प्लस 5d, और 7 टर्म्स कितना होता है, a प्लस 6d होता है, तो दोनों को ऐड कर दो तो 2a प्लस, ये डायरेक्टली हो जाएगा 11d, तो प्लस 2a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 167। अब क्या करेंगे, आप इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। सो उसके बाद 5 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये इक्वेशन आपकी पहली आ जाएगी, plus 2a plus 11d is equals to 167, and then when you multiply these two terms you will get 10a, और तो कुछ नहीं कॉमन ले सकते ना, नहीं, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, n की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर 5 आएगी, so you can write here 5 minus 1। okay, so you can write here 10a plus 4d, okay, 10a plus 4d को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, so 10a plus 20d plus 2a plus 11d is equals to 167. Then you add these two, you will get 12a plus 31d is equals to 167. This is your first equation. Got it? समझ आया? Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको लिखना होगा इसकी 10 टर्म्स का सम, यानी 10 टर्म्स मतलब 10 by 2 sum of 10 terms is equals to 10 by 2 bracket 2a plus 10 minus 1 into d, 10 minus 1 into d, then you can get here 5, तो यहीं पर आ जाएगा, so 5 bracket 2a plus 9d, okay, so यहाँ पर आपका जाएगा 10a plus 45d, so कितना गिवन है, 235, so 45d and this will be equivalent to 235, okay, 235। नाउ आपके पास सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, दोनों को आप में से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10a प्लस 45d इज इक्वल्स टू 235। ओके, समझ आया, हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब आपको a और d की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो किस से मल्टीप्लाई करें, 6 से कर लेते हैं नीचे वाली इक्वेशन को, इसको 6 से, इसको 5 से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई के लिए एलिमिनेशन मेथड से आप इतना तो कर ही सकते हैं। सो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन यू विल गेट 60a प्लस 5 1 5 एंड 5 3 15 d इज इक्वल्स टू 5 7 35, 3 कैरी, 5 6 30, 5 7 35, okay, 3 carry, 5 6 30 and 3 33 and 5 1 5 and 3 8 35, and here we have okay, 835. Now we have 60a plus 45d, sorry, you have to multiply this one also by 6, so if I multiply it by 2, so I get here 90270 is equals to 635. So when you multiply this one with 6, 235 and multiplied by 6, 235 and multiplied by 6, you will get 6 5s are 33 and 6 3s are 18 and 3 21, 2 carry, and 6 2s are 12 and 2 14, so 1410 is it so? हाँ, इतना ही आएगा।
अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 270 में से अगर 155 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? सो 270 में से 155 जाएंगे तो we'll get 5 here, or we can 6. Okay, 6 minus 5 1, and it is 155. Yeah, it is 115, sorry, 115. So यहाँ पर 115d, 115d is equals to, अब इसी में से हम लोग 1410 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 835 को, so we'll get 5 here, 11 minus 3 यहाँ पर है, 11 minus 3 you will get 8. Okay, 11 minus 3 you will get 8, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा ना, बस तेरा, that will be 585 ना, 585. So you'll get 115d is equals to 585, and when you divide it with this one, you will get, I think, 17 पंजे 85 ना. So 585 and divided by, is it 7 आएगा कि 13 में से 8 तो 5 ही बचेगा ना. ओके, और यहाँ पर हमारे पास है 11, 11 minus 3 8. So d is actually 115. So you divided by 5, you will get 75 ना. मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी कहीं पर छोटी सी, क्योंकि d एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, 75 होता तो एकदम एग्जैक्टली आ जाता, 5 टाइम्स d की वैल्यू 5 आ जाती. तुम्हारी d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? आप लोग की d की वैल्यू कितनी आई थी? 5 ना, तो मैंने यहीं पे कहीं मिस्टेक कर दी है, छोटी सी सिली मिस्टेक कैलकुलेशंस में. 1410 आएगा कि नहीं आएगा मैं चेक कर लेता हूँ. 6 when multiplied by 235. ओके, तो 235 when multiplied by 6, 1410 सही है. और 1410 minus 835, it is 575. क्या गलती कर रहा हूँ, 875, yes, 75. then when you cut it you will get 5 ना. so d is equals to 5 आ गया. इसी तरह से आप इसी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे. किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. और जब a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, तो आप 28 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट 28 टर्म का सम आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन होगा आगे. ओके ओके, सो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आप रेगुलर रहिए तो इनफैक्ट आप बहुत अच्छा, देयर विल बी नो सच क्वेश्चन कि आपने एक एग्जाम में, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने ये क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया. यू विल बी हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वी प्रैक्टिस अ लॉट, वी हैव प्रैक्टिस ईच एंड एवरी पार्ट फ्रॉम एवरीवेयर. We just practice the previous year question papers. We just practice the NCERT. We just practice the NCERT exampler. We just practice this important questions, repeated or important question from various NTS examinations. We just practice the important question from R.D. Sharma, R. Silvar, and many other books also. So I just want you to be continuous in every class so that you will learn definitely something new and to deal with some different questions, because mathematics is by practice. So don't miss any class. इनफैक्ट नॉट फ्रॉम बोथ मैथ्स एंड साइंस, दोनों ही करना है तो बहुत अच्छे से कीजिएगा. सो आई विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस द न्यू चैप्टर. ओके, हेलो मिरादुल्लाह, हेलो मिराज, हाउ आर यू? Hello, sir. How are you? I'm fine. आई एम फाइन बेटा. ओके, सो व्हाट यू विल गोइंग टू स्टडी टुडे? क्या पढ़ेंगे आज आप? बहुत दिन से हम लोगों ने कुछ नया नहीं पढ़ा था. जो आप कहेंगे आज हम वही पढ़ेंगे. बताइए क्या पढ़ा जाए आज. बोलिए बच्चों, व्हाट यू वुड लाइक टू स्टडी टुडे?